guys, how are you all today? So I've made a video on how to become a pilot. So still everyone has a lot of questions. So this time I've asked my ma, who is a senior captain. So today she will brief us. Ma, come. Hey, Abhi. Hi. So, Yeah. So, I'm gonna tell you about step by step about how to become a pilot. Actually, Aradhya has covered a lot of stuff in his video, but still there are a lot of query and a lot of people want to know about other things. So let me start with the same thing that for pilot you have to be 12th pass with physics and maths. So so ma, there are a lot of people who have not done physics and maths. So what about them? yeah, so that is a question. A lot of people ask me that we have a commerce background, we have arts background, what do we do? So no problem at all. You have to tell them that they have to give physics and maths. 12th, they can do 12th again. ओपन स्कूल से 12th होता है. देर इज NIOS ओपन स्कूल होता है. उसमें आप पूरा साल घर पे बैठ के पढ़ सकते हो और आपको सिर्फ एग्जाम देने जानी है. सो फिजिक्स एंड मैथ्स यू कैन डू विद दैट and you can do 12th again, just physics and maths, that's it. But what about medical now? Okay, so for medical, so we have two kinds of medical, class 1 medical and class 2. We can start off with class 2 medical, but see personally I want to tell you all कि आप class 1 medical से शुरू करो. class 1 medical strict होता है. ऐसा ना हो कि आप class 2 करें एंड यू स्टार्ट फ्लाइंग और बाद में पता चले कुछ प्रॉब्लम है. तो सबसे अच्छा ये है कि आप क्लास 1 मेडिकल कीजिए और उसके बाद फ्लाइंग शुरू कीजिए. क्लास 1 मेडिकल में बहुत चीज़ें होती है, जैसे ब्लड चेक, CBC, रूटीन यूरिन, देन ECG, EEG, आई साइट, ऑडियोमेट्री, blood sugar. There are a lot of things they check in class 1 medical and mostly वो होता है जो एयर फोर्स के डॉक्टर्स करते हैं, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है वो. But what about eyesight? eyesight, yeah, a lot of people ask that चश्मा है तो हम क्या करें, या हम लोग लेंस लगाते हैं तो there is no problem. As long as with specs or with lenses, whatever, your eyesight has to be 6/6. Even if you wear specs, it's fine. Your eyesight has to be 6/6. माँ, बहुत लोग पूछते हैं कि फ्लाइंग कहाँ से करें, कंप्यूटर नंबर कहाँ से ले और एग्जाम्स कहाँ से करें, तो उसका क्या है? तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब आपको 12th आपने कर लिया, उसके बाद आपको मेडिकल करना है, एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, फ्लाइंग करनी है, बहुत सारा देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू. सो ईजिएस्ट वे आई वुड सजेस्ट इज़ यू जॉइन अ फ्लाइंग क्लब. जॉइन अ फ्लाइंग क्लब. फ्लाइंग क्लब वाले आपको असिस्ट करेंगे, आपको कंप्यूटर नंबर लेने के लिए असिस्ट करेंगे, आपको ग्राउंड स्टडीज़ कराएंगे टू क्लियर द एग्जाम्स, आपको फ्लाइंग कराएंगे. फ्लाइंग 200 आवर्स होती है. डू 185 आवर्स ऑन सिंगल इंजन एंड 15 आवर्स ऑन मल्टी इंजन. दैट इज़ हाउ यू कंप्लीट 200 आवर्स. Otherwise, the best thing is this is the website. Okay, website you'll put now here. Okay, so this is the website and www.dgca.nic.in. इसके अंदर हाँ, आपको फ्लाइंग क्लब, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कौन सा फ्लाइंग क्लब अच्छा है. आपको फ्लाइंग क्लब वही चूज़ करना है वेदर इट इज़ इन इंडिया और अब्रॉड, विच इज़ DGC अप्रूव्ड फ्लाइंग क्लब. ओके, नहीं तो आप फ्लाइंग करके आ गए और वो फ्लाइंग क्लब DGC अप्रूव नहीं हुआ, आपकी सारी फ्लाइंग, सारा पैसा नल एंड वॉइड हो जाएगा. इसीलिए आप ये जो वेबसाइट है, इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि क्लास 1 लिस्टेड डॉक्टर्स कौन है, हॉस्पिटल्स कौन से हैं, क्लास 2 मेडिकल्स के लिए डॉक्टर्स कौन कौन से लिस्टेड डॉक्टर्स हैं इन योर सिटी. देन कंप्यूटर नंबर आपको कैसे मिलेगा वो भी इस वेबसाइट से आपको पता चलेगा. एंड DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग क्लब, दे ऑल आर लिस्टेड इन दिस वेबसाइट. यू जस्ट सर्च फॉर इट. But what if I'm a doctor, a lawyer, 26 or 27 years old, then what to do? So age criteria, basically you want to say age Yeah. criteria and your background. Okay. Yes. So even if you're doctor or engineer or lawyer, no problem. You just have to be 12th physics and maths. And age is actually
if you can finish your CPL before 30, it will be good, because a lot of airline, they do not take after. So every airlines has different age requirements. Some has 30 years, some has 32, some has 35, some even go till 40 years. So you can finish it, like if you want to do it, if you are passionate about it, you can do it even if you are 27, 28 years old. But is there a job guarantee? Okay, so none of the padai, or in none of the academics, nothing gives you job guarantee. You do MBA, you do engineering, you become a doctor, nothing gives you job guarantee. Okay, so I cannot tell you and right now that there will be a job guarantee. You'll really have to work hard for it. Yes, you can do one thing. There are a lot of cadet programs going on in airlines. I think, if I'm not wrong, Indigo has it, Spice also had it. I don't know if they still have it, but you can just inquire that. They take little more money, but I'm sure they have this job, like your chances of getting job, of doing a cadet program with an airline is much more higher than if you do it on your own. That's what I suggest. But how long does it take to do the commercial pilot training? So it depends on you. You have a lot of money. Yeah. You have you study very hard. Yeah. Okay. So you work very hard. You study. You're medically fit. Yeah. Okay. So if you're medically fit, you've done your medical. You work hard like my son. And if you have money, you can if you pay on time, like not money kind. So I did it when I did my flying. I took a lot of loans. That's how I did it. And so you can finish it off in like average 1.5 to 2 years, not more than that. Okay. Yeah. Any other advice do you want to give, Mom? Okay, so let's just go step by step, and you'll write it on the screen, na? Yeah. Okay, so first 10+2 physics and maths, join a flying club, get your class 1 medical done, get your computer number from DGCA, clear all your exam, air navigation, air regulation, meteorology, technical specific, general, and yes, RTR exam. उसके बाद do your flying 200 hours, 185 hours on single engine, 15 hours multi. Other than everything is fine. Yes, you have to be Indian citizen. If you want to work in India, you have to be Indian citizen. And yes, a lot of people ask about पैसे नहीं है, हम लोग क्या करें? तो आप पूछ सकते हैं. There are a lot of government flying club, state sponsored and central government sponsored, जो they give scholarship, but you can please check it, because right now I have no idea. But when I was flying for SC/ST candidates, and for few, like there were people from NCC also, they got scholarship. So you can get scholarship. And otherwise, don't stress your parents, please. You can take bank loan, but bank loan, educational loan में आपको mortgage रखना पड़ेगा, and job की guarantee नहीं है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा. Thank you so much. माँ, पर अगर पैसे नहीं है तो और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं, मतलब CPL में आपको एटलीस्ट 25 to 35 lakhs तो लगेंगे. और आप कर सकते, उसके बाद आपको टाइप रेटिंग भी करनी पड़ेगी. टाइप रेटिंग में भी 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं. और आप कर सकते हैं, एक तो आप बैंक लोन ले सकते हैं. दूसरा, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं है एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट फ्लाइंग, यू कैन प्लीज़ आस्क गवर्नमेंट ऑपरेटेड फ्लाइंग स्कूल फॉर स्कॉलरशिप. एंड लास्ट अगर कुछ भी नहीं है, देन यू कैन डू NDA. यू कैन जॉइन इंडियन एयरफोर्स. देर आर लॉट ऑफ कार्गो प्लेन्स, देर आर लॉट ऑफ passenger planes are there in Indian Air Force, and you can fly there without spending even 1 rupee. Government will pay for all your training, and after training they will pay you also, but you need to clear NDA. Some exams are there, so SSC, some short service commission board exams are there, so you need to clear that. And that's how you can do it without money also. Thank you, Mom. Thanks for your time and teaching us. Thank you. Bye. Keep inspiring everybody. Yes. Guys, like and subscribe.
And yeah, bye. Ma, I want to ask you one more thing. या tell me. So what's the main language like if we do not know English? इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज. इनफैक्ट इंग्लिश का टेस्ट होता है, देर इज़ अ ELP, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो इंग्लिश आना ज़रूरी है. Okay.